Welcome back to another episode of Chit Chat Chakas. My name is Angelica. And my name is Himali. As promised, बातें तो सिर्फ दिल से होंगी and so we are bringing to you some spicy and masaledar gossip. Before we dive in, jaldi se subscribe karo. It's free. And if you are new here, we are more than just a podcast channel. We are your internet best friends. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Life can be tough, and sometimes you just need a feel good conversation. बातें जो दिमाग and दिल को सुकून दे. तो जल्दी करो subscribe. It's free. To keep the drama real and spicy, today's Reddit question is, have you ever dated a gold digger? Hmm, that's a good one, I must say. So, moving towards our first comment we have is not me, but my friend dated a gold digger. He needed Starbucks every day and she bought him stationaries. She had to do all of his college work because they are classmates. If they went out, she had to pay for the entire thing. If she did not, he would bully or ghost her. They broke up thankfully, although he wanted to get back together recently. The audacity. I think this is very common thing to happen during your junior college and bachelor degree times. Yeah. And this guy tag us as gold diggers. हाँ ना, पूरा इंटरनेट बोलता है कि female are the one who are gold diggers. But it's good to have a little bit women perspective about men being a gold digger. Uh-huh. And the fact that he wants to get back together already says कि भाई इसके पैसे खत्म हो गए. अब उसको बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए. उसके खुद के पैसे खत्म हो गए. ओह माय गॉड, सो ट्रू. सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, बट ऐसे दोस्त भी होते हैं, वो जब भी हम बाहर खाने जाएंगे या कुछ ऐसे मूवी देखने जाएंगे, तभी वो लोग बराबर अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, फिर बोलता है अरे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तू पे कर दे, मैं तुझे रिटर्न कर देता हूँ. एंड फिर वो कभी रिटर्न वो पैसे वापस नहीं, कभी दिखते नहीं है. कभी भी नहीं. ऐसे समझ लो कि हमने दान कर दिया. So the another comment goes, not gold digger, but I guess an opportunist. I dated a guy who dumped me when I was fired from my first job. He later told our common friends that he was embarrassed of me. I was 22. Jokes on him today. I mean, why was he embarrassed for dumping her? क्योंकि तेरा बैंक को तूने ब्लॉक कर दिया या फिर तूने 22 ईयर ओल्ड को एक बैंकर रख दिया तेरे लाइफ में. But yeah, you can say maybe not everyone we tag gold digger correct लगता है, but yeah, I think opportunist, social climber might be a little Hmm. more appropriate tag for this. But अच्छा है ना, अभी उसने छोड़ दिया, इससे पता तो चला. और तेरे यंग 20s वेस्ट नहीं जा रहे कोई स्टूपिड लड़के के ऊपर. अब इसके सेविंग्स ज़्यादा हो जाएंगे. So the next comment is, my sister was nearly married to one. My mother clearly said no dowry, but this dude had the audacity to ask 4 lakhs for reconstruction for his house even before the wedding. Wedding is cancelled. Thank God the wedding is cancelled. काम शुरू होने से पहले उसने 4 लाख मांग लिया. भाई गट्स है रे उसमें. हाँ, बट ना द होल अरेंज मैरिज सिस्टम ही मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टू गोल्ड डिगर फैमिलीज कमिंग टुगेदर. या. एक जन को चाहिए सेटल्ड फैमिली हो, पैसे वाली फैमिली हो. दूसरे जन को चाहिए कि डाउरी में या फिर गिफ्ट्स में महंगी महंगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, कैश, ये सब मिले. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आई फील लाइक ये जो अरेंज मैरिज पूरा सिस्टम है, इट्स लाइक टू गोल्ड डिगर फैमिलीज कमिंग टुगेदर. So the next comment goes, yup, my ex was one, never paid for any date. She dated for almost 2 years when I was in 11th and he was in 12th. Every mid-range or expensive cafe we went to, I offered to pay and he never offered to pay, nor did he offer to split. Every basic cold coffee and poha or vada pav thela we went to,
I paid, and he never offered to pay, or did he offer to split? We gave a joint party to our friends to celebrate our dating phase. I cringe now that I look back. I paid for it too. Poor thing. मेरे पास क्यों नहीं दोस्त है जो पार्टी देते हैं फॉर डेटिंग फेज? एंजल, तुम्हें क्यों नहीं दिया? मैंने भी तुझे नहीं दिया। मुझे लगता है वो स्टारबक्स वाला जो है ना, वही वो यहाँ पर भी आ गया है। हाँ, मतलब फैक्ट दैट यार 15 रुपए का वड़ा पाव, 15 है या 10 रुपए? 10 रुपए का मतलब वड़ा जो भी पाव। है 10-15 वड़ा पाव, मतलब वही रेंज में है। वहां पर भी तुम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। कंजूस, कंजूसी, कंजूसी भी द राइट वर्ड नहीं है ये चीज के लिए। पता नहीं कहाँ से Is आते this हैं बे really? ये लोग। भगवान जाने। बट ना ये 12th स्टैंडर्ड का किस्सा और फर्स्ट ईयर का बैचलर डिग्री, मैंने आसपास ये चीज बहुत देखा है और सैडली हुआ भी है। एक्चुअली आई न्यू अ फ्रेंड, ठीक है, जिसके बॉयफ्रेंड ने चॉकलेट्स भेजे थे फॉर वैलेंटाइन सेलिब्रेशन, ठीक है। इट वाज दिस चॉकलेट डे एंड उसने चॉकलेट्स भेजे through that friend for his girlfriend, and he never paid that friend. At the end, the girlfriend only had to pay out of her pocket to pay back the friend. ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। शिट, मतलब टेक्निकली गर्लफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के साथ ही वैलेंटाइन वीक मनाया। हाँ, उसने खुद के लिए ही चॉकलेट्स सेंड किया है। यार करो ही मत यार, मत करो। क्यों ही करना है? इससे तुम महान नहीं दिखते हो। नहीं है जेब में पैसे तो ठीक है भाई। वेट, ये क्या किसने कमेंट किया है? नो, आई डिडंट डेट माय सिस्टर। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है अपनी बहन के बारे में। नहीं यार, मेरा वैसा वर्सा है। cons of being a elder sister. That got too dark too fast. So the another comment is, yes, unfortunately 7 times. I have spent around 40 lakhs on these girls combined. First one was in 2014. Amazing girl at first. Spent around 12 lakh in 11 months of relationship. Expensive shoes, perfume, vacation, dinner, etc. Also loaned her 3 lakhs for some urgent family issue, which later turned out to be a loan for buying drugs and spending money with her boyfriend of 5 years. Found out about this when she accidentally sent me their private pictures on WhatsApp and took 2 minutes to delete them. I usually end up with gold diggers. Bad luck, I guess. Have gifted 5 iPhones to them. Was about to buy a flat with one girl in Delhi, but thank God I got to know her true colors few days before we were about to sign the sale deal. None of my relationships completed 1 year mark, and I have spent almost every Valentine's Day alone since the first. ये क्या भाई मैग्नेट पैसा है? कितना है तेरे पास? मतलब 40 लाख? कौन है ये? और वो भी एक लड़की पे नहीं, ऐसे उसने बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स पे उड़ाया है। 5 आईफोन, 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और भगवान। और इसने जिस डिटेल में लिखा है, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मेरा इतना लॉस हो गया। oh you know what, वो 40 लाख कैसा भी वसूल कर सकता है? He can create like a database of gold digger girls because he attracts those, and then he can blacklist and share that data with other guys. पैसे दो, डेटा ले लो। कुछ तो बट फिर वसूली आई होगी इसकी। हाँ, एंड बट फिर आई फील ऐसे ही लोग हैं जो डाउरी मांगते हैं इंटरेस्ट के साथ, यही पैसा वसूल करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है, आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ा सा क्या है, वो शायद ना वो वाला दिल्ली बंदा है वो जो बोलता है, अरे मेरे बाप के पास तो ये है, मेरे पास इतनी जमीन है, अरे पैसे तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये वही लड़के हैं जिनके साथ यही चीज होती है। 40 लाख, आई कांट गेट ओवर इट। This next comment is, my first ex told me we would only get married if I immigrated to US and made $150,000 per year. Otherwise, her parents wouldn't ever consider it. तो उसके पेरेंट्स गोल्ड डिगर्स है।
क्या ये जो हो रहा है? एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, कि इतना पैसा वाला लड़का होना चाहिए, तो उतना पैसा डाउरी भी देना पड़ेगा। तो वही है ना, मतलब वो अल्ट्रा रिच होने के लिए वो लड़की का पैसा लेके जाता है ना, आई एम द सुपर रिच पर्सन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तुझे चाहिए कि एक बहुत बड़ा अमीर सेटल्ड बंदा चाहिए, ये ले, इतना हम पैसे तुझे दे देंगे, हमारी बेटी के साथ शादी कर ले। फुल तो फिर मतलब बिजनेस फायदा ही डील है। क्या है? एंड वो 40 लाख वाले बंदे को कांटेक्ट करके ऐड करा देना डेटाबेस में। We have a confession from Amchi, Mumbai. So here we go. In love with a possible gold digger, need honest advice. We are nothing but honest. I am 28, male, an engineer and MBA. I work in a decent paying finance job in Mumbai. Through Tinder, I met this girl born and brought up in Mumbai. Super hot, works on and off as a model. However, she or her family is not that well off comparatively. I don't know why he's making comparison between the family. Money. As if he's dating a family. Okay. I smell some gold. I see the shine. When we started dating, I showered her with gifts and pampered her as much as I partly because I knew my good luck might not repeat again. However, as time has passed, her expectations are only growing. Her lifestyle is too expensive, and while I can afford it up to a certain level, I get the feeling that sometimes she might be with me only for money. पहले तो लड़के ओवर द टॉप चीजें करेंगे, सब कुछ देंगे, अपने हैसियत के बाहर जाकर देंगे, और फिर वही चीज को कंप्लेन भी करेंगे। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, फिर जूहू चौपाटी भी नहीं ले जाऊंगा, ये थोड़ी ना होता है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चलता है क्या? हाँ ना, थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग से तुम एक पेस पकड़ो ना, वही पेस जहाँ तुम लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते। सडनली ऐसे जाकर फिर ऐसा नहीं आना है ना। पहले सपने दिखा। इट्स जस्ट फ्रॉम अ गर्ल, थोड़ा एक ओपिनियन ले लो, काम आ जाए। ओके, बैक टू द स्टोरी. Some key points of our relationship. Every month, I spend around 50 to 70,000 on average on her. This includes shopping, gifting, fine dining. She only wants to dine in 5-star, traveling, etc. Not once she has paid or even offered to pay for any expenses. वहाँ 40 लाख, यहाँ 50-60 महीने का। भाई ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी बताओ यार। Anyways, पूछ लेता तू। पूछना भी नहीं है एंड फिर रोना भी है। ब्यूटी इज एक्सपेंसिव, ऐसे ही नहीं मिलता। एंड उसको पता है कि उसकी किस्मत कैसी है, उसको नहीं मिलेगी ऐसी लड़की, इसलिए वो ओवर द टॉप जाके कर भी रहा है चीज है, ताकि वो रुके। Exactly. नहीं चाह कर भी तूने उसको गोल्ड डिगर बना दिया है। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि उसने तुझे ये करने के लिए पूछा है। नहीं, उसने कहा ना कि शी ओनली वांट्स टू डाइन इन 5 स्टार। आई डोंट नो ब्रो। रुको जरा, सबर करो। लड़के तो ओवर एग्जैजरेशन तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, फुल बटर घी जो मिलेगा सब लगा के दे दो, और ये सब तभी करते हैं जब वो लड़की उनको छोड़ के जाती। Back to the story. The girl, she doesn't like to work. Her career is going nowhere and she has no plans to do much about it. पापा की परी होगी, हर लाइफ हर रूल्स। Her choices. Our romantic and sexual relationship is great. She's pretty open, caring, and affectionate. Honestly, something no other girl has made me feel yet. How she's a gold digger. We have discussed marriage, and she has given me mixed signals. Being unsure myself, I never pushed it from my side. However, it's now becoming a more common topic in our discussion. My friends have warned me of her few times, calling her a gold digger, stuff like that. My fear is that if I leave her, I won't get anyone even close to being as attractive as she is. Not that I'm an ugly guy or short or bald, but she's still way out of my league. My family has started bringing up the topic of marriage, though I usually avoid discussing it. But with time, I need to take a decision and maybe look at the arranged marriage route, because I don't have the time and energy to go through the whole dating cycle again. Would you know
would love to know what people here think. My most important question is her love real, or is it just an act to keep her lifestyle? Should I break up, or is there any other possible solution? एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इज योर लव ट्रू, और तू सिर्फ शो शाइनिंग मारने के लिए तेरे को वो लड़की चाहिए? No. And if you're already thinking कि maybe you have to do arranged marriage, but maybe you will never have an attractive girl, I think तो उसके साथ you're not there for relationship, love, nothing. You would have never asked this question. या मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है और चाहिए क्या? But at the same time, I would say this guy is a hot digger. मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस I know there is no word that exists, but it's new vocab. A hot digger. What? A hot digger and a gold digger are coming together. What's the problem? ट्रू लव, once more ट्रू लव. So where do you draw the line? If someone is a gold digger or not? It's an interesting question. Let's make it into a game. You tell me a scenario and I'll tell you if they are gold digger or not. Okay, we can do that. Scenario 1. They ask you to pay for every meal when you go out, even though they have a stable job. गोल्ड डिगर. साइड बाय साइड ये खुद पैसे सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और इधर इसका बैंक बैलेंस खत्म कर रहा है. पैसा ही पैसा होगा. Scenario 2. They always insist on dining at expensive restaurants, never offer to split the bill. गोल्ड डिगर. ये भगवान क्या जुल्म है. Okay, follow up question. Do you ever offer to split the bill? Yes, always. And do you really split the bill? Yes, I do. Good. Good girl. अच्छा सिखा है. मेरी ट्रेनर ही बहुत अच्छी थी. Okay. They constantly talk about your financial situations and ask about your income and assets early on in the relationship. क्या ही चाहिए, तो सबसे बड़ा गोल्ड डिगर है भाई. हाँ ना? पहले देखेगा कितना है एंड फिर पीछे आएगा. Like it's so awkward to talk about like financial situations with each other. कैसे लोग कर लेते हैं पता नहीं. I had this experience. बहुत ही छोटी थी, बहुत छोटी नहीं, but I was in high school. So it was not with not in the sense of relationship. It was in friendship. Long story short, वो मेरे घर पे आती है and she asked my parents, oh my dad is hospitalized, I need money, बहुत urgent है वगैरह वगैरह. So my parents are like, okay fine, your dad is hospitalized, we'll give you some money, and they gave. नेक्स्ट डे वो वापस आती है एंड शी इज लाइक अंकल ज़्यादा पैसे चाहिए, कैन यू हेल्प मी मोर? तो देन माई पेरेंट्स कॉल्ड मी एंड दे आर लाइक सो दिस इज दिस थिंग एंड शी इज आस्किंग फॉर मनी. मेरे को नहीं पता था. तो मी बीइंग वेरी लाइक, मैं कितना ही थी यार, 13-14 साल की, एंड माई पेरेंट्स आर आस्किंग मी टू मेक अ डिसीजन हियर. मतलब मुझसे कोई मांगता तो मैं ऐसे निकाल के दे देती. तो आई वॉज लाइक हाँ दे दो, उसके डैड की तबीयत खराब है तो लेट्स जस्ट हेल्प अस. बट ठीक है यार, मतलब दे दिया वगैरह सब कुछ. फिर 1 महीने के बाद उसकी माँ मेरी माँ को कहाँ मिलती है पता नहीं. सो फेस टू फेस माई मॉम इज लाइक शी डिडंट इवन एक्नॉलेज मी, एंड देन व्हेन माई मॉम केम बैक होम शी कॉल्स माई मॉम, I need to go to an family event. Can I get the your gold to wear? And my mom is like, ये कुछ अलग ही दुनिया है. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का. Till date, I have never received those money back. It's been like more than 15 years. And वो बहन जब भी मैं उसको देखूं भाग जाती है. उसकी माँ is the real gold digger. She literally asked for gold jewelry. Yeah. Oh, I also have a story. Huh? This happened actually in France itself. Had this roommate, American roommate, and we organized this Halloween party in my apartment. So a lot of my friends, classmates, people I know, they all came for the party. There was this Indian guy from my class, I think, and his family had a gold business, some gold mining or something, I don't remember. So this American girl, she got very interested, like sparked, like
He has a gold business and stuff. And keep in mind, she already has a fiance, and her fiance is also in the party. So once the party ended in the night when we were just winding up, she told me, you have a classmate, he's Indian too, and his family is into gold business and stuff like that. And I'm like, yeah, I know, I've heard about it. He said, oh, you should date him. And I'm like, okay, why? It's like, yeah, but come on, he's rich and everything. I don't care. I Yeah. don't care. My parents are also pretty well off. They have provided me whatever they could. And from now on, I can provide for myself. So I don't need that. And then she said to her fiance, like, you know what? I should date this guy, that I should get married to him, and then I will divorce him, and then I'll get money from him, and then we can happily live off. What? What? And I was like, okay, I need a drink for this conversation. Like, I can't comprehend at all. Bhai, what motivates them to think all this? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. I don't know. But to go so dark and to be so shameless to tell even to her, Your not boyfriend? boyfriend, fiance, they were engaged. Yeah. And his fiance, I could see he was so embarrassed. In back of my mind, I'm like, maybe she's also gold digging you. You should question yourself. Maybe he's already questioning. मैंने क्या जल्दी में इसके साथ engagement कर लिया क्या? Another scenario. They frequently mention their financial struggle and hint at needing help, even though you have just started dating. Why is there a need of mentioning I it? think it's the biggest red flag. I agree. They are the biggest red flags. आज बड़ा रेड टी शर्ट पहना है तूने. That does not mean I'm the red flag, guys. Let us know what is gold digger for you. Where do you draw that line? And if you consider gold digger as a red flag, because that's something. Let me throw another scenario to you. First one. They become more affectionate after you buy them something expensive. Possible. Gold digger. Yeah, possible. Second one is they seem less interested when they find out you don't have a high paying job. And also, like, less interested when you do not have the job, or you leave the job, or you try to start something on your own. Red flag Yeah. and gold digger flag. संभाल के रहो. Yep. If you want to avoid potential gold diggers, watch our video and let us know what you think. Yes. And we give unbiased opinions, guys. Even though we are very feminist. Okay, that's all for today's episode. Stay tuned for our next episode, जिसमें हम लेकर आएंगे और भी थ्रिलिंग स्टोरीज स्ट्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेडिट. तब तक के लिए आपका ख्याल रखो और अपना दिल और अपना वॉलेट संभाल के रखो. भाई मजा आया. वाली साइनिंग ऑफ. सावधान रहो, सतर्क रहो. बाय. नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे हम वापस.